बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं एज यूजुअल। इसमें भी हम वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट सिनेरियो रिलेटेड टू द surgery viva preparation. So in the first scenario, I will be the candidate and Dr. Numan Tasneem will be the examiner. So it will be followed by the feedback session. So please. Achha. 65 years old male patient who is a non-hypertensive. He comes to you in emergency department with the complaints of pain abdomen for the last 12 to 14 hours. This is associated with nausea and generalized unwellness. So how will you approach this patient? Okay, it's a 64-year male patient who is in hypertensive and presented in the emergency department with a sudden with acute abdominal pain. So I will take the history from the patient and specifically the about the pain, what's the duration of this pain, with all the characteristics of the pain and associated symptoms like vomiting, constipation, absolute constipation, abdominal distension, fever, any jaundice. Okay, so what next? You have taken history. What next? So I would like to see afterwards. Obviously, I will perform the physical examination and see how the look of the patient, is he sick looking or not? What is the pulse, blood pressure, is running fever? You have examined the patient. The patient is sick looking and abdomen is generalized. There is generalized tenderness in abdomen. So there is a generalized tenderness means that this patient is having evidence of peritonitis. So I will start off with the resuscitation. So I will pass the two IV cannula, start with IV fluids and send the samples, blood sample for the lab investigation from CBC, amylase, lipase level, along with other investigations. At the same time, I will give them the antibiotics, put in the Foley's catheter, and I will order a chest X-ray direct, so see whether there's any air under the diaphragm or not. And so I will continue the resuscitation, and meanwhile, and I keep the patient NPO as well. So I will review the result of the investigations and the chest X-ray. So amylase is mildly elevated, and chest X-ray is normal. There is no air under diaphragm, and rest investigations TLC is a bit high. Otherwise, but the patient's pain is worsening. Pain is worsening, and the tenderness is increasing. Tenderness has increased. Has increased, and is there distension as well? Moderate distension. Moderate distension. What is the pulse? What is the character of the pulse? It's irregular, irregular. Pulse is regular. It is 110 beats per minute. Okay. Okay. So I would like to ask the question from the patient from the history. Is there any previous comorbids apart from the hypertension? Is he taking any drugs or not? And so my next investigation would be he advised multiple tests due to his hypertension, but he didn't go to the hospital for checkup. Okay, in order to reach to the diagnosis, I will arrange contrast and CT scan for the patient of the abdomen and pelvis. You have done contrast and CT scan. It just shows a mild amount of fluid in the pelvis. Mild amount of fluid in the pelvis. So there's nothing else I would discuss with the radiologist. Is there any other finding? Is what is about the bowel? Is there any evidence of bowel thickening or not? Is there any fat stranding? Till now, what is your differential diagnosis? So I am suspecting either this patient has perforation, which is sealed perforation, or patient may be having a pancreatitis. It's in the early phase, so is it only 12-hour history. So that is the possibility. The third one is this patient could have mesenteric ischemia as well. Keeping in mind that he's hypertensive, a 64-year male patient. Okay. So after you observe him for 24 hours, but the vital signs have worsened more, and the abdominal pain, and now the abdomen is rigid. There is board-like rigidity. Yes. What will you do now?
Now, obviously, now patient is deteriorating. So the next step would be do the exploration. So I will counsel the patient and arrange the OT space and prepare him for the exploratory laparotomy. Okay, so you have opened up the patient and you find uh, gross gut gangrene in the small gut, starting from about mid jejunum to distal ileum. Okay. So that means that the patient has there's already it's a gangrenous segment. So and I would like to see whether what is the status of the peritoneal contamination and what is the status of these mesenteric vessels. Obviously, this gangrenous portion will require the resection, and at the same time, I would like to know what is the patient's general condition, what is its hemodynamic status, is in hypotension, and I would discuss with the anesthetist and see that depending on the contamination, then I um, will decide about the further plan. Okay, so you have resected the gangrenous portion and you have done a primary anastomosis. Post-operatively on day 2, the patient vital signs are pulse is 100 beats per minute, BP is 140 by 90, and his urine output is okay. His drain shows about 300, 400 ml of hemoserous fluid. What is your next step? So in this patient, so there should be a planned re-exploration because there's a possibility of re-thrombosis. So after 48 hours, there must be second relook. I will go for the second look. So on second look, you find everything okay. The your osmosis is okay and the gut is okay. So what next? The next would be we'll continue the anticoagulation and keep the patient NPO, continue with the IV fluids and see the progression of the patient. Okay, so the patient is now patient is well, he has recovered, and you are about to discharge him. So any specific advice you will give to him? But with this patient, obviously, we need to see the length of the from the mid jejunum to the ileum. That means this patient is at risk of developing short gut syndrome, and he will be requiring the input from the nutritionist as well. So, depending upon the patient has been weaned off the TPN or not, and I will get the input from the nutritionist, and we will advise about the diet. Okay. So anything you will what you will advise him in the diet? Diet it will be define short gut syndrome. Define short gut syndrome. short gut syndrome is the remaining bowel is less than 100 centimeter. So less than 100 centimeter, 80 to 100 centimeter. The patient develop signs symptoms of the short gut syndrome. So patients are at risk of developing the malabsorption syndrome. So for these patients, we need advise them to take a small meals, small frequent meals, avoid high concentrated carbonated drinks, and along with the need to give them the nutrient supplements like Ensure powder. So we need to get the advice from the nutritionist. So this will be advised by the nutritionist. Okay, thank you, Dr. Shafkat. हाँ भी उस्मान पहले तू बता. Sir, it was a well defended case and correct diagnosis because it was a patient 63 years old with hypertension with abdominal pain. I think there was when Sir Noman Tasneem has said that the amylase is normal, then your first diagnosis should be after perforation, it should be acute mesenteric ischemia. Pancreatitis should be slightly raised, not normal. Slightly raised, लेकिन इसमें slightly raised होता है mesenteric में. Right. But this again, in the acute pancreatitis, if the history is short, it is markedly raised. Yes, in acute pancreatitis, but it it is takes markedly time. raised. Amylase also takes time in pancreatitis. Takes time to Sir. reach its peak. At least 24 hours तो आपको चाहिए. और initial में sir. contrast and CT scan भी आपका normal होगा.
मतलब क्रैप सर पेंक्रियाज में नॉर्मल होगा, अगर 12 आवर्स की जी हिस्ट्री है तो सर। उसमें पेंक्रियाज भी नॉर्मल आएगा। अब सर इसमें मैंने पूछा कि इज देयर एनी और बाउल थिकनिंग, बाउल थिकनिंग बाकी एसोसिएटेड। हाँ। यस, हम्म, हम्म। in history you should ask about any cardiac because he has given you the data about hypertension. You should always ask about any antiarrhythmic drugs or arrhythmias, history of वो तो arrhythmia, मैंने, whether हाँ हाँ ठीक है, तो वो तो उसमें पूछ लिया he ना कि इज द कोमॉर्बिड्स, आई वुड आस्क द कोमॉर्बिड्स, इज द पेशेंट टेकिंग एनी ड्रग्स। अभी ब्रॉड उसमें अगर वो पूछते कौन सी ड्रग, तो वरना हम्म, एक एक करेंगे वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। हम्म, व्हाट डू यू थिंक? बाकी हाँ बाकी इट वाज ए वेल मैनेज्ड केस। और इसमें अब ये है कि प्राइमरी एनास्टोमोसिस और एक्सटीरियराइजेशन में फैसला करना शायद जो है ना, बिकॉज इन दिस कंडीशन तीसरे दिन जो है ना प्राइमरी, क्योंकि एक दिन गुजर गया और फिर दूसरे तीसरे दिन जाके ऑपरेट हुआ मरीज। तो तो उसमें उसको मैंने सनुमान एस्मोसिस नहीं किया। मैंने क्या है कि जी आई विल रिसेक्ट दिस गैंग्रीनस सेगमेंट एंड हम्म, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस I would like to know what is the status of the peritoneal contamination, what are the hemodynamics status. I will discuss with the anesthetist. So depending upon this data, then I will decide the further plan. So examiner himself gave the data. Yes, you have performed the anastomosis. हम्म। जी सनुमान। अच्छा, इसमें एक तो तूने ईसीजी का बिल्कुल जिक्र नहीं किया। हाँ, ईसीजी का मेरे इसी की ख्याल में मैंने पल्स पूछा था। हाँ भैया, अब ये उसमें था ना कि जिस तरह मैंने कहा कि प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द लेप्रोटमी। अब प्रिपेयर में अब मैंने अपने हिसाब से कहा कि प्रेपरेशन के अंदर दिस ऑल थिंग्स आएंगी, ब्लड बाकी ईच एंड एवरीथिंग और इन्वेस्टिगेशन। इसीलिए बिल्कुल मैंने नहीं उसको जिक्र नहीं किया स्पेसिफिकली। दूसरा, इसमें हमने सुना है कि करवाते भी थे, हमारे ये लैक्टेट लेवल्स करवाते थे बड़े शौक से हमारे सीनियर हाँ में। लैक्टेट लेवल बिल्कुल कराते हैं। है, इलेक्टेड है। इलेक्टेड लेवल जो है ना, वो इनिशियल जो ब्लड सैंपल जिसमें सीबीसी, अमाइलेज, लाइपेज, बाकी मैंने कहा था अदर इन्वेस्टिगेशन, आप उसमें स्पेसिफिकली साथ लैक्टेट बोल देंगे कि ये वाला सिनेरियो है जब आपने कहा कि जी जनरलाइज टेंडरनेस है, तो लैक्टेट आई थिंक आई शुड इंक्लूड, दिस आजकल मोस्ट आजकल इंपॉर्टेंट। तो लैक्टेट की इतनी इंपॉर्टेंस है कि लैक्टेट शॉक के हर मरीज में हाँ इट इज बिल्कुल। वन ऑफ द प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर मेरा ख्याल है। और डायग्नोसिस के लिए आपको जो जो भी शॉक का पेशेंट है उसमें लैक्टेट हैज टू बी incorporated in investigation because it shows anaerobic respiration wherever it is, because it is indicator of hypoxia and anaerobic respiration metabolism, जिसकी वजह से ये बढ़ता है ना कहीं पे भी। तो ये अब हर जगह पे, इवन ट्रॉमा में भी लैक्टेट का ना बहुत जिक्र है, हर जगह पे भी हाइपोटेंशन के साथ लैक्टेट लाजमी कराना चाहिए मेरा ख्याल है, जिस सर नुमान कह रहे हैं कि नॉट ओनली फॉर एब्डोमेन बट आल्सो फॉर अदर कंडीशंस एज वेल। तीसरा, ये बताओ, ये री एक्सप्लोर हर केस में करना है या जो अगर बिल्कुल स्टेबल हो उसमें नहीं करना? इस अब ये है ना, रीएक्सप्लोर पे डिपेंड, ये जिस तरह की क्या कंडीशन थी, अगर तो प्राइमरी एनास्टोमोसिस किया आपने, तो फिर बगैर उसके रीलोके में किस तरह पता प्रोग्रेशन होगी दोबारा उसकी, आपकी एनास्टोमोसिस क्या कंडीशन है, उसमें तो प्लान री एक्सप्लोरेशन। अगर एनास्टोमोसिस किया तो कंटेमिनेशन नहीं है, तो फिर तो री एक्सप्लोरेशन तो मस्ट है, या फिर दोबारा भी हो सकता है ना। तो अगर हाँ, अगर आपने स्टोमा बाहर लिया है, फिर तो आपके सामने है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा ना। अगर एनास्टोमोसिस, फिर तो आपकी मस्ट है री एक्सप्लोरेशन। और सर एंटीकोगुलेशन का रोल इसमें डिस्कस करना चाहिए मैं थोड़ा सा, हाँ वो क्योंकि करेंगे, क्वांटिटी एंटीकोagulation। हाँ एंटीकोगुलेशन पोस्ट ऑपरेटिवली यू हैव टू गिव हिम एंटीकोगुलेशन और एंटीप्लेटलेट्स जो है ना इसको मेसेंटेरिक इस्कीमिया मतलब के वही हम मरीज लो को। मॉलिक्यूलर इट इज हेपरिन जस्ट देंगे लाइक जिसका इस्केमिक हार्ट थेरेप्यूटिक डिजीज है डोज ना। में। हम्म। जी सर। थेरेप्यूटिक डोज में देंगे इसको, क्लेक्सेन देंगे थेरेप्यूटिक डोज में। जी सर, एप्रिन या क्लेक्सिन जो भी है वो देना बिल्कुल। चाहिए। और जो है बाकी इट वाज ए वेल जो है ना आंसर। अच्छा, ये शॉर्टगट सिंड्रोम देख नहीं, मेरे ख्याल में ये है कि 100 सेंटीमीटर से गट कम अगर कोलोन नहीं है, और कोलोन है स्मॉल तो बाउल। 50 सेंटीमीटर। हाँ सॉरी, मेरे ख्याल में इस तरह है। कितना सर? शॉर्टकट सिंड्रोम मुझे जितना याद है ना, 50 सेंटीमीटर से गट अगर कम रह गई है और कोलोन की मौजूदगी में, और स्मॉल बाउल कोलोन मतलब नहीं है 50 तो 100 सेंटीमीटर। से कम। हाँ अच्छा, चलिए ये इसको चेक कर लेंगे। अगेन इट डिपेंड्स कि आपने जेजुनम पीछे है या आइलियम है, उस पर भी डिपेंड करता है। जेजुनम है या आइलियम आप में पीछे है, कोलन साथ है कि नहीं है, तो ये सारी चीजें फिर उसके साथ ही लेटर ऑन उसको टीपीएन पे उससे वीन ऑफ होगा कि नहीं होगा पेशेंट ना। हम्म। और दूसरा एक ये चीज बताना लाजमी है कि आई वुड काउंसल द पेशेंट इन अटेंडेंट बिकॉज इट्स a हाई mortality ऑपरेशन एंड mortality विद इन दिस कंडीशन इज वेरी हाई। और प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग भी लाजमी है इसमें जो है ना, इस्केमिक मेसेंटेरिक इस्कीमिया में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
because mortality is as high as 70 or 50 to 70%. Or ठीक है तो मिजान किधर है सलाम सर आप ऐसा करें ना सर आप बल्कि सर नुमांस I'm searching for this. Let me. ये आ रही है केस सिनेरियो जी सर आ रहा है केस सिनेरियो ट्रॉमा लिखा हो ट्रॉमा वाली जगह पे आ रहा है ट्रॉमा आ रहा है बस नहीं एक नहीं ये नहीं ये एक मिनट है ये फिर इसको मुझे पहले स्टॉप करना पड़ेगा हाँ अब आ रहा है जी सर okay 25-year male patient has been brought in the emergency department with the history of patient is a respiratory distress and the the ER physician they have performed his chest X-ray, and you have been called to see the patient. This is his chest X-ray. They have performed a needle decompression, and they found there's a radius serous serosanguinous discharge, and they have sent you a call to review the patient. What will you do? I will approach the emergency department and according to acute emergency ABCD, I will first of all see the respiration of the airway of the patient because this X-ray Airway shows there patient, is but he is the respiratory distress. yes there is tracheal deviation. I will immediately give him oxygen and examine his chest. I will palpate his trachea and whether it is Saturation is 70%. 70% and I will auscultate and percuss his chest because it appears to be some respiratory problem. After needle thoracotomy, I will immediately. He was having a road traffic accident. No, there was no. There's What not. I would take history of what was he doing? It was spontaneous shortness Because of breath, or he developed sudden onset of the respiratory distress, but prior to this, he's also had a history of chest discomfort off and okay. on. Then I will But the immediately. patient in the respiratory distress right now. Okay, he's conscious oriented. I will talk to the patient whether he is. He's unconscious. He is conscious. He's talking, but he's in distress. Okay, after needle thoracocentesis, I will do finger decompression of the chest because my suspicion is either acute tension pneumothorax due to spontaneous rupture of some Pneumothorax. bulla. Tension pneumothorax. Hemo, On which side? Right side or left side? on left side, he has So uh, pneumothorax. no, there is no pneumothorax. It is uh, So on which side do you think the pathology? On the right side or the left side? on the left side, I think. On the left side. Yes. So it's opaque, completely opaque. With the Yes. with the There might be a to the massive opposite side. hemothorax. Okay, what is the next step? I will insert chest drain to decompress the chest, and I will also try to find the history of the patient. After doing the chest is about 1800 You are not audible. Please, you are not audible. So after putting the chest tube, they found around 1700 ml of serosanguinous fluid. Okay. Patient symptoms they have improved. His Okay. respiratory distress improved. Now his saturation is 92% with oxygen. Uh, What will be next? uh,
I will see whether what is the breathing pattern of the patient and what is circulatory condition of the patient. Is he hemodynamically stable or not? I would like to know his Patient, pulse. patient's pulse is, And right now his pulse is of 110 per minute, and the blood pressure is 110/70. okay, I will get ample after resuscitation and patient airway is secure. I would like to know the history of the patient, that why this spontaneous shortness of breath has occurred. What is I will, after the which yes, patient is that? I would like to know whether there is any history of trauma, any history of smoking. Uh, Is he a smoker this or not? patient this patient had a history of stab wound left upper abdomen, which was about 1.5 year ago. At that time, the chest X-ray was performed. This was his chest X-ray. Okay, He presented 14 months after the initial presentation with the chest covered, but chest X-ray was this was his chest X-ray. 40 months uh, after the incident. okay. His chest stab was in lower chest or in upper chest? It was his left upper abdomen, left conjugal. And Left upper abdomen. He might have diaphragmatic injury at that time, which was missed. Because of that, there might be some herniation of, because I can see. Can you show me the previous X-ray? There is a shadow on the left side of the chest. There is probably uh, some diaphragmatic hernia that is pushing the uh, lung next towards the step? opposite side. What will be your next step? Yes. What will be your next step? I will do after stabilizing and his airway. I will like to do his CT scan of his whole chest and abdomen. Okay. Contrast and a CT scan of the abdomen and chest. Once patient is stable, Plain CT, I would like to plain CT. uh, contrast oral and IV contrast and CT So scan. the contrast and CT scan shows that the colon is herniating into the left chest. Now, what will next step? Yes, yes, because my suspicion was initially that he has some diaphragmatic hernia, because that was a diaphragmatic injury that was missed in initial operation. Now I will like to consult my thoracic surgeon, and also I will discuss this case in a multidisciplinary team, and we will The surgeon plan is to not explore the available. patient. He is not Okay, available. okay, then we will. I will plan to explore the patient, do the laparotomy, and I would like to repair the diaphragmatic injury that How was will you, missed how will you approach it? previously. What will be your steps? So you I have will opened up approach. the abdomen with Yes, chest I will X-ray. I will open the abdomen through upper midline in CN, and I because it seems that left lobe dome of the diaphragm or crura of the diaphragm has been injured. So I can extend my INCN to chevron. I can make a chevron INCN upper midline and left lateral, and see what is the extent of diaphragmatic injury, and I will repair the diaphragmatic injury Now you have opened, because once you have opened up the abdomen, so you have noticed that yes. the colon is herniating into the left. Okay, then I will because I will bring the colon down and see the injury of the diaphragm, how much diaphragm there is defect in the diaphragm. Okay. I So will you do the have herniatomy. colon is, what do you like to see? The colon, colon is gangrenous. Yes, I will like to assess the viability of the colon, and Gangrenous. it is gangrenous. Yeah. Then I will and what is the extent of gangrene of the colon? What portion of the colon was gangrenous? Transverse colon, whole of the transverse colon. Okay, then I will resect the uh, gangrenous segment, and I will bring proximal because patient is unstable. I will bring proximal colon as a colostomy, and distal colon. After resecting, I will bring out as a mucus fistula. What will you for Yes, what will you do for the I will repair diaphragmatic injury how will you with repair it? I will.
repair it with non-absorbable suture, either PDS or Prolene one, and I will also uh, place the mesh under the diaphragm, so that if defect is small, I will repair it primarily, or if the defect is large, then I will place mesh, uh, interpositioning mesh. Yes, but so you will place the Yes. mesh in the presence of strangulated gut, right? You are not audible. So you have said that you will place the mesh in the presence of gangrenous gut. No, I have exteriorized the gut, Okay, you uh, extrude the gut, then you will primary place the anastomosis. mesh. So I will, You will place the mesh as well. if defect is large, then I can uh, pericardial uh, Is there any patch, other pericardial patch? or Okay. What would you do for the chest? Because the gangrenous colon was residing inside the chest. uh, I will consult thoracic surgeon. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Sam. Thank you. G. You have done very well. So obviously, this patient usually the diaphragmatic hernia they are missed in the initial presentations, and later on सर करीब होके थोड़ा सा. the diaphragmatic hernias they are usually missed during the initial presentation. So the penetrating trauma, there's a small wound in the diaphragm, and if it's not associated with the hernia in the acute phase, so it's easily missed. So the later on the patient they develop the herniation, and the patient might end up with the complication like obstruction of the strangulation. So they usually present just like as a detention pneumothorax or hemothorax. And in these cases, if you do the tube thoracostomy, that will worsen the outcome, right? Because they're putting the chest tube that can damage the herniated viscera. So it's very important. So whenever you see such like an X-ray, is you're suspecting a sudden onset of respiratory distress, um, we must always ask for is there any history of the trauma? And if you examine the chest for the breath sound, the added sounds, so you may be able to find it. You may be able to hear Bowel the bowel sounds. sound as well. So this is the most of the time it's you can say it's these are detected after putting the chest tube. Afterwards, we come to know that yes, there's an underlying it's a diaphragmatic hernia. So it's very important. So once you have picked up initially chest intubation, then you asked me about the history. I will take the history, and I told you yes, this patient had the previous history of the staph wounds. So then you clinch the diagnosis. Yes, this is a diaphragmatic hernia. So then you involve your thoracic surgeon. But I put you in the scenario that thoracic surgeon is not available. So you took this patient to the for the exploration. So I think if the colon is herniated, you can ask the further question. So, what is the status of the colon? What is the patient's condition? If it's not in that emergency, so I will transfer the patient. I will discuss with the thoracic surgeon. That will be the best approach because after 18 months, it will be difficult to reduce the colon. There will be a lot of adhesions. So you may have to do the thoracotomy as well in this patient, right? So then you have to do the enough lavage of the pleural cavity. You put in the two chest tubes, and then you are once you have reduced the content, you see the what is the size of the defect? It's less than 2 centimeter, more than 2 centimeter, up to 10 centimeter. It's more than 10 centimeter because the long standing of diaphragmatic hernia, the muscle they get atrophied, diaphragmatic muscle. So the defect becomes enlarged. Initial acute stage में, even the larger defects can be closed primarily. But in case of the chronic hernia, because of the muscle atrophy, it's very difficult to bring it closer. और उसमें फिर क्या कहते हैं, we have the options कि आप we need to involve आपके plastic surgeon LD muscle flap आप लेके आते हैं अंदर. You need to relocate the diaphragm. कोस्टल मार्जिन से 2 सेंटीमीटर आप रहते हुए वहीं पे निक देते हैं
और उसको अपने डायफ्राम को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। और डिफरेंट ऑप्शंस जो है। लेकिन अगर मैं कहूँ एक्यूट फेज में है, एक्यूट फेज में कोई भी पेशेंट आता है, आपके ब्लंट ट्रॉमा है या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, ऑलवेज सस्पेक्ट द डायफ्रामेटिक हर्निएशन, डायफ्रामेटिक इंजरी। आप उसके किस तरह करेंगे, चेस्ट चेस्ट एक्सरे विद एनजी ट्यूब, जो इनिशियल जो स्क्रीनिंग है आपकी। और जब भी आपने फॉर एग्जाम्पल हीमोडायनामिक अनस्टेबल पेशेंट आप यू हैव टू पुश ऑपरेशन थिएटर, उसमें फिर क्या करेंगे, ड्यूरिंग द एक्सप्लोरेशन यू नीड टू असेस द डायफ्राम ऑन द बोथ साइड, ठीक है। और उसमें सेंट्रल टेंडन में बाज का हर्निएशन जो नहीं पेरिकार्डियम में भी चली जाती है, उस तरफ भी है ना। तो आपने उसके लेफ्ट लोअर लिवर जो टेंडन जो है उसको भी देखना पड़ता है, सेंट्रल टेंडन। लेफ्ट डायफ्राम को आप स्टमक को नीचे पुल करेंगे, स्प्लीन को उसको देखेंगे, और दूसरी तरफ भी। और वैसे भी जब भी ट्यूब थोराकोस्टमी करते हैं तो उससे पहले फिंगर थोराकोस्टमी से फील करते हैं अंडरलाइन। एक तो होता है डीएंस हाँ है जी। कि नहीं है, दूसरा देखते हैं बाउल के कंटेंट, वो भी फील जो है ना आपको एट टाइम आते कि यार कोई और चीज है, लंग नहीं है। तो फिंगर थोराकोस्टमी जो है ना। तो जी ये सर। है कि इसकी जो मैनेजमेंट है इनिशियल आपने उसमें रखना है। बल्कि मैं अगेन आपको इसका मैं शेयर कर देता हूँ, अगर हाँ ये इसका जो है ना, हाँ ये देखें इसकी जो है ना, जो कंक्लूजन है ना, जो देखें सॉरी, diaphragmatic hernia rupture, especially without diaphragmatic hernia, can be easily missed during the initial assessment, right? So it should be in the differential diagnosis of any patient who present with the dyspepsia or the shortness of breath, especially those with the previous history of thoracoabdominal trauma, right? तो ये आपने उसका जरूर रखो। जैसे नीचे देख लें साथ लिखा, these patients are usually managed as tension pneumothorax और hemothoracx। इस जे भी केस रिपोर्ट के इसके अंदर भी सेम इसी तरह उन्होंने इस पेशेंट आया, चेस्ट ट्यूब डाली है, और बाद में पता चला कि ये तो कोलन हर्निएट की हुई, ठीक है। तो ये होना वैसे आइडियली है कि चेस्ट ट्यूब नहीं डलनी चाहिए, चेस्ट ट्यूब डलने से उससे ज्यादा मामला जो है ना खराब हो सकते हैं। अच्छा सर, ये चेस्ट ट्यूब जो नहीं डलनी, तो ये इसकी एयरवे मैनेजमेंट कैसे होगा? अभी ये तो इतनी इमरजेंसी हाँ, सिचुएशन में विदाउट एनी हिस्ट्री, अब पहले मैंने ये समझा। आप जब भी ना स्टार्ट में पूछ लेते ना, देखो अगर आप पूछते थे स्टार्ट में ये सिनेरियो हम्म हीमोथॉरैक्स है ना, हीमोथॉरैक्स नहीं है, हम्म आपको बिल्कुल ओपेक है, तो आप स्टार्ट में हम्म, करते, आपने पूछा था कोई ट्रॉमा केस, मैंने कहा अभी से कोई ट्रॉमा नहीं हुआ, तो मुझे पहले कोई हाँ। ट्रॉमा हुआ इसका कोई। अगर मैं उसी वक्त आपको आप पूछ रहे थे पहले हुआ था, तो मैं कहता हम्म कि हाँ यस 1.5 ईयर इसको पहले हुआ ट्रॉमा पहले, हम्म ठीक हो गया। तो फिर आप उसी वक्त उसके सस्पेशन चले जाते। तो जनरली होता यही है कि इस तरह के एक्सरे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ और हिस्ट्री उस तरीके से हम्म पेशेंट से जो ना वो पूछते नहीं है, खासतौर पे इतनी कि ना उन्होंने इमरजेंसी वाले ने पूछा, ना आगे जो ट्रीटिंग चेस्ट ट्यूब डालने वाला वो भी उनको डिटेल में नहीं पूछा, तो इस तरह ये मिस हो सकता हम्म। है। ठीक है। तो सनुमान जी। सर, आप इस पे रोशनी डालेंगे था थोड़ी सी? हाँ नहीं, बता दिए शफाकत ने सारा कुछ। मेरे ख्याल में बस यही है, मैश का मेरे ख्याल में कोलोन की कंटेमिनेशन में जिक्र ना कर मैश का। हाँ, ठीक उसमें है। है पर फ्लैप होता है, अगर फर्स्ट नहीं क्लोज आ रहा है तो फिर क्या करते हैं, या तो हाँ। डायफ्राम को रिलोकेट कर लेते हैं, डायफ्राम ठीक को है। सेंट्रली ना इंसिजन दे के, तो डायफ्राम को हम्म ऊपर ले जाते हैं, इंटरकॉस्टल मसल के साथ स्ट्रेच कर देते हैं, और जो नीचे वूंड सही। रहेगा ना उसको ऐसे एब्डोमिनल वॉल के वूंड की तरह ट्रीट करते हैं, या सही है। मसल जो ना एलडी मसल का फ्लैप लेके आते हैं इस तरफ। तो लेकिन ये सारी सही है। रिकंस्ट्रक्शन, ये सारी चेस्ट वॉल की इमरजेंसी में रिकंस्ट्रक्शन प्लास्टिक ये बाद में सर्जन होंगी। उनके साथ, हाँ, उनके साथ है। हम्म तो इलेक्टिव सेटिंग में बिल्कुल उसमें मैश डालते हैं, बड़ा गया डिफेक्ट है हम्म मोर देन 10 सेंटीमीटर। हम्म। बस बाकी वो यही पूछ सकता है किस सूचर से करोगे, तो मेरे ख्याल में प्रोलीन 1 से करते हैं इसको। हाँ प्रोलीन, हाँ जी, और दूसरे प्रोलीन नंबर का। आपने ये था वाटर एयर टाइट होना चाहिए, तब आप उसका दबा एयर टाइटल वॉल्यूम उसको कहेंगे एनेस्थेटिक्स को इंक्रीज करें, ज्यादा दे एम्बू बैग उसके साथ जो ना एम्बू पे ले लें, हम्म और हम्म फिर देखें कहीं कहीं पे कोई रेंट तो नहीं है, तो ये आपने जरूर दें, और और चेस्ट इसके ट्यूब, साथ आपने चेस्ट ट्यूब भी जरूर डालनी है ना इसके साथ, चेस्ट इसकी ट्यूब जब भी डाल, चेस्ट रिपेयर ट्यूब करें डाल तो दें। चेस्ट ट्यूब भी डालनी। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। अच्छा आपने कहा एयरवे किस तरह मैनेज करेंगे ना, अब एयरवे अगेन इस तरह के जो पेशेंट आप जो पता चला कि डायफ्राग्मेटिक हर्निएशन वाला है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, उसमें तो उन्होंने लिखा हुआ इंटूबेशन का जिक्र किया कि इंटूबेट करें, इंट्यूबेशन का। हाँ, चेस्ट ट्यूब नहीं, अब अब इसका ना इंटूबेशन। एक्सरे में आप देखें ना कि इसका ट्रिकेट डेविएटेड था, पूरा मिडिस्टाइनम शिफ्ट हुआ हुआ था एक साइड पे। तो इसमें कोलन जो अंदर गई हुई थी ना। हाँ। तो तो मकसद ये कहने का था, ये सिनेरियो मैंने इसलिए रखा है ताकि नेक्स्ट जो है ना में हम्म कि जब भी ट्रॉमा का सिनेरियो आएगा तो डायफ्राग्मेटिक
तो इंजरी को प्रीवियस ट्रॉमा के बारे में हमने हमने पूछना है। डायफ्रागमेटिक इंजरी को हमने पहले टच नहीं किया, तो ये मैंने हम्म सिनेरियो ये बनाया था। ठीक है, तो अभी जो है ना, नेक्स्ट जो है ना सिनेरियोज है ना, अब कौन रह गया, किसने बना था जी कैंडिडेट? नुमान ने बना। मैंने हाँ चलो उस्मान, आप बन जाए एग्जामिनर अभी। चल सर मैं पूछता हूँ। Okay, Dr. Oman, you have a patient who presented to emergency department with sudden onset of chest pain following a severe episode of coughing. On examination, he is hypotensive, he is tachycardic, he has tachypnea, his blood pressure is 90 by 60, and he is in severe distress. There is a mild subcutaneous emphysema on his neck. How would you approach this patient? Okay, so the patient is in shock. I will immediately activate my emergency team, and I will assess his airway, and I will auscultate his chest. As you have already mentioned, he has subcutaneous emphysema. I will order for 2 large IV lines and start with the crystalloids. And I am suspecting esophageal tear in this patient, uh, secondary to excessive coughing. So Okay. I will, I will like to stabilize the patient first. I will pass Foley catheter, start with IV fluids, and then I will send blood for routine investigation, baseline investigation, along with grouping cross match. And Okay, if after initial investigation, what would you do about esophageal injury? I will, if the patient has become stable, I will get a chest X-ray, likely a portable chest X-ray, to see the findings, and then I will, if the patient is stable, I will request my gastroenterologist colleague Okay, chest to. X-ray reveals marked pleural effusion on left side. Okay, so I will like to carry out a tube thoracostomy on the left side. I would like to put in a chest tube so as to protect the left thoracic cavity and to improve the patient's ventilation and distress. And next, I will request my gastroenterologist colleague to perform an upper GI endoscopy to Okay, upper see. GI endoscopy reveals a large perforation in lower one-third of esophagus. Okay, so I will make the patient NPO, and I've already put him in broad spectrum IV antibiotics, and I will confer with my senior of thoracic surgeon, and I will like to request him to take over the case. Okay, thoracic surgeon is not available and you are the only surgeon. Like to check with the thoracic surgeon how far is he from my hospital, and I will see if I can safely transfer the patient in a state. Okay, you cannot transfer the patient to the, there is no thoracic surgeon in vicinity, and patient is Patient requires an emergency and a big surgery. He needs esophageal repair, uh, probably from the chest thoracic approach, and it's a major surgery and it's a high risk surgery. So I will consult the patient and patient's attendants about the risks involved in the surgery, and I will prepare him for I think right thoracotomy for this esophageal repair. okay, right thoracotomy. Why the right thoracotomy? Because contamination is on the left side. I think I don't remember exactly, but we used to approach the esophagus from the right side easily. So I have to confirm it. Sorry, I have to confirm it from Okay, okay. Okay, you have approached the patient through lower thoracoabdominal approach. You have repaired the esophageal injury.
how would you do the nutrition of the patient post-operatively? So this patient needs to be put on total parenteral nutrition, as he is to be remained nil parorum for about at least 8 to 10 days. So I will discuss with my intensivist who is with me management of the case, along with the nutritionist as well, and put him on total parenteral nutrition after determining his caloric requirements of 24 hours. Okay, thank you very much. अच्छा, तो इसमें सर शफाकत, इसको राइट साइड से ही अप्रोच करती है या मैं भूल ही क्यों गया बिल्कुल? उस्मान, एक पता है क्या, मेरा मेरी ऑब्जर्वेशन है, सिनेरियो इतना क्लियर ना बनाए स्टार्ट टू बिगिन विद ना, थोड़ा सा ठीक है। हाँ, जब आपने एम्फाइजीमा भी बता दिया ना कि एम्फाइजीमा देना, तो आप क्लियर हो गया इससे एसोफेजियल परफोरेशन ना, थोड़ा सा रखें ताकि वो मैंने असल में इसलिए खुद किए, इसलिए किए कि सर को हमने टॉपिक पहले बताया नहीं था ना। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसमें जो आपने अनुमान, you started out very well with the resuscitation. You immediately pick up the diagnosis. This is a case of esophageal perforation, and you went for the chest intubation and antibiotic resuscitation. I'm concerned. You went for the after the chest intubation, you went for the upper GI endoscopy. I'm wondering why. Why upper GI endoscopy? You are suspecting it's esophageal perforation. It's a spontaneous perforation. So why upper GI endoscopy? Hello? उसका नेट खराब हो गया शायद। सर शफाकत, हाँ सर म्यूट हुए हैं। सर सॉरी, शफाकत, क्या हुआ था? आपकी आवाज स्टक हो गई थी दोबारा से। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ सर, you started off very well. You clinched the diagnosis. It's esophageal perforation. You started off with the resuscitation and antibiotics. You put in the chest tube as well. So after that, once you pick up the diagnosis, is spontaneous esophageal perforation. So I'm wondering, why did you request for the upper GI endoscopy? To confirm the diagnosis. So confirm the diagnosis. So in spontaneous esophageal perforation, so there is a fusion, there is a pleural fusion on the left side. So that is the indication for the exploration. So if you want to know what's the approach, you need to confirm the diagnosis. So that next investigation is contrast and CT scan of chest and abdomen with oral contrast. ठीक है, That has less. एंडोस्कोपी में करना है। हाँ, एंडोस्कोपी नहीं है ना, अगर वो परफोरेशन एंडोस्कोपी का है, अगर एंडोस्कोपी मैनेजमेंट कुछ एसोफेजियल परफोरेशन जिसको एंडोस्कोपी मैनेजमेंट है उसकी, लेकिन इसमें आपने अगर इनिशियल आपने क्या करना है, इसमें तो अब क्लियर कट वो है आपका जी, इतनी क्योंकि ये बड़ी मैसिव होती है, इसकी टीयर भी बड़ा होता है, 4-5 सेंटीमीटर का टीयर होता है, बड़ा टीयर होता है इसके अंदर ना, 3-4 सेंटीमीटर का इतना। तो उसमें तो आपकी इसकी तो है इंडिकेशन, स्पॉन्टेनियस एसोफेजियल परफोरेशन की इंडिकेशन ही ये वाली है, आपने सर्जरी करनी है इसके अंदर ना। तो आप कंट्रास्ट एंड सीटी स्कैन करेंगे, वो भी आपने अप्रोच देखने के लिए किस तरफ से जाना है। अच्छा, किस तरफ से जाना है कि जिस तरफ की इफियन है ना, उसी तरफ की साइड की टीयर है, लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे हुआ है ना, तो इसकी जो एसोफेगस है हुई हुई है, और एब्डोमिनल जो नीचे से आ गए वो लेफ्ट से अप्रोच करते हैं, लेफ्ट थोरैकोटॉमी से। अगर आपने राइट वाली एसोफेगस है वो अपर है ना, थोरैसिक वो एसोफेगस, मिडल मिडल वो राइट मिडल से है। मिडल हाँ, मिडल के और लिए सर्वाइकल एसोफेगस अगेन लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से है। थोड़ी सी टर्न है, जो सर्वाइकस नेक में एक्सप्लोर करनी तो लेफ्ट से करेंगे, और अगर चेस्ट में करनी है थोरैसिक एसोफेगस तो राइट से। मिडल मिडल 1/3 मिडल हाँ, मिडल वाला। और डिस्टल जो ओके, थर्ड है वो आपने लेफ्ट से करनी है, वो लेफ्ट से आएगी। और दूसरे नंबर ये हमें पता चल जाता है कि इसकी प्लूरल ब्रीच किस तरफ से था, तो सीटी स्कैन आप करवा लेंगे। उसके ठीक बाद है। फिर आप अच्छा सर, एक और चीज मैं आपको ऐड करना चाहता एसोफेजियल हूँ कि जो रिपेयर, परफोरेशन होती एसोफेजियल रिपेयर, लेकिन इसके अंदर एसोफेजियल रिपेयर नहीं है। जो एंडोस्कोप आपने कहा ना रिपेयर करूंगा इसके अंदर, अब इसमें पेशेंट सेप्सिस में होगा, रिपेयर नहीं है इसके अंदर। आपने क्या करना है, बेसिकली डैमेज कंट्रोल सर्जरी है। डाइवर्जन करनी है।
हाँ, थोराकोटमी की आपने अच्छा किया कि आई विल हैंड ओवर द पेशेंट टू थोरेसिक सर्जन। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, ही इज नॉट अराउंड, तो उन्होंने कहा नहीं, आई विल ट्रांसफर द पेशेंट। आपने पूरा किया कि इसको मैं भेज दूंगा। अब आप थोराकोटमी जो करती हैं, लेफ्ट थोराकोटमी जो है, पोस्टोलैटरल जो थोराकोटमी है ना, वो करते हैं, और उसके साथ आपने उसको ड्रेन कर वॉश किया, और जो जहाँ पे रेंट है ना, वहां पे रिपेयर तो अब कर ही नहीं, को बड़ा रेंट होगा, तो उसमें क्या होगा, कंट्रोल फिस्टुला बना लेते हैं। एक ये भी तरीका, टी ट्यूब, टी ट्यूब, हाँ, टी ट्यूब डाल ट्यूब दे। डालें और बाहर ले आए। या फिर दूसरे नंबर पे आपके डिस्टल एंड को टाई करें, ठीक है, और प्रॉक्सिमल को भी, इसोफेगोस्टमी कर दें। हाँ, ऊपर एसोफेगोस्टमी कर, और डिस्टल अपनी फीडिंग जो है ना वो कर दें, जिजोनोस्टमी कर। इसोफेगोस्टमी की तरफ नेक में कर दें हाँ इसोफेगोस्टमी। सर, हाँ बिल्कुल। वो है ना, आप गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन को टाइक बंद कर दें, हाँ बिल्कुल। और नीचे और आपने, ऊपर जो इसोफेगस है उसको आप एज ए बार इसोफेगोस्टमी निकाल दें। हाँ, तो नीचे आप मतलब फीडिंग नेक में निकाल निकाल सकते हैं। देना, हैं जी? नेक में निकाले ना उसको, नेक में। नेक में हाँ निकाल, हाँ जी। और नीचे बिल्कुल। फिर स्टमक में कोई ट्यूब डाल दें, स्टमक में पैक शेक डाल दें या कोई इस तरह। स्टमक में नहीं डालनी स्टमक सर, में, बाद में आपको स्टमक स्टमक को में नहीं करना डालनी। पड़ेगा। अच्छा, जब भी ना स्टमक को ना हमेशा अवॉइड करना, जब पेट में स्टमक डालनी। को कोशिश करें अवॉइड करें, आप जिजोनोस्टमी कर दें बेशक ना, फीडिंग जिजोनोस्टमी। ठीक है, ठीक है, ताकि उसको उसकी रीजन रिटेन। उसकी रीजन ये है कि स्टमक को ना आप स्पेयर करते हैं, क्योंकि कल को स्टमक की आपने ट्यूब बनानी है ना, तो स्टमक हम्म, कंप्रोमाइज हो जाता है फिर। ठीक है। तो फीडिंग के लिए जो है ना, हमेशा बात करें फीडिंग जिजोनोस्टमी की, ठीक। टेम्परेरी। ये सिनेरियो है ना, ये आपके इस तरह से परफेक्टली ड्यूरल सर्वाइकल कस्पियर अपर एब्डोमिनल पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट किया, और आपने बनाया कि ये परफोरेशन है, ठीक है। परफोरेशन के साथ आपको नीमोपेल्टोनियम में मिल गई, मतलब एब्डोमिनल एसोफेगस की परफोरेशन है, ठीक। अब नीमोपेल्टोनियम मिली कि आपने एक्सप्लोर किया, आपके देयर इज नो ड्यूरल परफोरेशन, देयर इज नो गैस्ट्रिक परफोरेशन, पोस्टीरियर वॉल की भी नहीं है। आपने बाकी कोलन भी देख ली, कहीं पे भी नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, अपने लेफ्ट लोब ऑफ लिवर को मोबिलाइज करना है, और एसोफेगस को देखना है कि वहां परफोरेशन तो नहीं है कहीं। तो ये सिनेरियो एब्डोमिनल एसोफेगस की भी, ये तो चेस्ट में गया ना, एब्डोमिनल जो एसोफेगस है 5 सेंटीमीटर, वहां पे परफोरेशन हो सकती है। और कफिंग के बाद नहीं होती, ये होता है वॉमिटिंग के बाद, फोर्सफुल जो वॉमिटिंग उसके साथ जो ना, ज्यादा कोई ज्यादा हैवी मील अच्छा, जो, दूसरा एक और चीज मैं अगर आप एंडोस्कोपी की बात कर रहे हैं ना, ये तो खैर बड़ी परफोरेशन, तो एंडोस्कोपिकली स्टेंट भी डाल सकते हैं आप टेम्परेरीली। हम्म, दूसरा जो है ना, आप एनजी डलवा सकते, आप एंडोस्कोपी डायग्नोसिस के लिए यूज नहीं हो सकती, लेकिन जो है ना आप एंडोस्कोपिकली एनजी डलवा सकते हैं एंडोस्कोपिस से, हाँ, और स्टेंट ये डलवा सकते हैं। ऑब्वियस है कि ये परफेक्शन है, ठीक है। हाँ। और मैं कराने में कंट्रास्ट नाइट सीटी स्कैन लेस वाला टाइम भी नहीं लगेगा, और जल्दी आपको पेशेंट एंडोस्कोपी टाइम लगेगा। तो इसके अंदर आप हम्म, कंट्रास्ट एनसीटी स्कैन कराएं, आपको मिलेगा, और उसके बाद आपने इसकी सर्जरी है। हाँ, अगर पेशेंट के मिनिमल साइन सिम्टम्स हैं, पेशेंट स्टेबल हाँ। है, ठीक है, जो आपको लगता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है, फिर आप उसकी हम्म। दूसरी तरीके से जाते ठीक है। अच्छा, मैं आपको इस सब्जेक्ट में रिवाइज करा देता हूँ सर थोड़ी सी। हैं। हाँ, अपर वन थर्ड के लिए जो है ना, और मिडल वन थर्ड और लोअर वन थर्ड के लिए जो अप्रोच है ना इसोफेगस की, जैसे सर शफाकत ने बताया, अपर वन थर्ड के लिए जो है ना लेफ्ट है, फिर मिडल के लिए राइट आइवर लिविस जिसको कहते हैं आप, और लोअर वन थर्ड के लिए दोबारा फिर लेफ्ट थोड़ा है अप्रोच। अप्रोच एसोफेजेक्टमी करनी है तो आपके डिफरेंट है। उसमें एक हाँ। ट्रांसआइटल एसोफेजेक्टमी है। ट्रांसआइटल हाँ जी। एसोफेजेक्टमी में क्या होगा, आप एब्डोमेन से मोबिलाइज करेंगे, और नेक के, और नेक में लेके जाएंगे, नेक में लेके और जाएंगे। ब्लाइंड, इट्स ब्लाइंड, ठीक है, जी। ट्रांसआइटल। दूसरा है मैक्यूबन। मैक्यूबन में क्या करते हैं, एब्डोमेन का मिड लाइन लेप्रोटमी, चेस्ट में होगा राइट, और नेक में 3 होंगे इसके इंसिजन। नेक में 3 फाइबर होंगे। ड्यूस में क्या होगा, इसमें 2 होंगे, 2 एब्डोमेन होंगे। का, और चेस्ट में, राइट चेस्ट नेस्टोमोसिस वो का, राइट साइड चेस्ट होगी। तो हाँ। वो चेस्ट में जाएगा नेस्टोमोसिस, ठीक है। हाँ जी। अब अगेन वो डिपेंड करता है आपने किस लेवल की लिम्फेडेक्टमी करनी है, ठीक है। हाँ जी, वो लिम्फेडेक्टमी के लिए है वो एमोरिस। हाँ, अगर बिनाइन उस तरह की कंडीशंस हैं, आपने क्यूरेटिव, मतलब जो ट्रांसआइटल एसोफेजेक्टमी, उसके अंदर लिम्फ नोड की डिसेक्शन वो नहीं होती, क्योंकि आप ब्लाइंड है। नहीं हो सकती। हाँ, तो वो आपके बिनाइन को क्रोसिव स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अंदर एसोफेजेक्टमी ट्रांस करेंगे, आप हाइटल नॉर्मली जो क्रिएटिव है ना, टाइप आप कर रहे हैं। ट्रांस हाइटल नॉर्मली होती है लोअर एसोफेगस की पैथोलॉजीज के लिए ना, अपर के लिए मुश्किल हो जाता है उसके लिए, उसकी लिम्फेडेक्टमी करना। हम्म, तो हम्म, लोअर गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन की जो ट्यूमर है उसके लिए ट्रांस हाइटल कर सकते हैं हाँ ज्यादा, बिल्कुल। और लेकिन लिम्फेडेक्टमी नहीं कर सकते इसके साथ नहीं फिर। कर सकते। बिल्कुल। तो ठीक है, तो चलें जी, 3 हो गए हमारे आज के सिनेरियो। जी सर। ठीक है,
तो ये बीच में सर मिजान आए थे, वो कुछ जवाब नहीं कुछ दे रहे थे। तो एनीवे चलिए आज हमारे जो तीन सिनेरियो। चले इसी सिनेरियो को थोड़ा आगे चलाऊं एक, क्या? इस सिनेरियो को आगे चलाता हूँ हाँ थोड़ा सा। ठीक है। You have done esophageal repair and esophageal repair failed. After that, thoracic surgeon has done his esophagectomy, and on post-operative day 3, there is chylus leak coming out from his neck wound. Leak from the so so the What is your diagnosis? it's a thoracic duct injury and the leakage from the Okay. that side. So Okay. again, like to see what is the patient's condition and the condition of the wound condition. Is the patient in sepsis or not? And what is the status of chest? Is the air entry equal on the both the sides? Okay. How would you diagnose and confirm the thoracic duct injury? The confirmation of the if we have if there is evidence of the pleurophilia, I will put in the chest tube. So then send the just looking at the color of the fluid and sending the fluid for the chemical analysis, chylomicrons and triglycerides. And similarly, we can have lymphoscintigraphy. Lymphoscintigraphy it can be done to diagnose this leak, and then Okay. there is Lymphoscintigraphic shows damage to the thoracic duct, and there is high output fistula. What would be your treatment option then? so if the patient is a high output fistula, then this need to be embolized if the facility is available. If the facility is not available, then the surgically closure of this precedent is required. Okay. Okay. Thank you. So intraoperatively, we can detect this leak by giving milk to the NG. So there will be a leak at that site. So we need to ligate that duct. अब लिम्फोसिंटिग्राफी भी इसीलिए होता है, इसकी करते हैं हम जो एंकल है बेसिकली उसके जो लिम्फेटिक्स होती है ना, उसको ये कैमुलेट करते हैं, उसके थ्रू ऊपर जाते हैं लिम्फोसिंटिग्राफी करने के लिए ना, लिम्फेटिक चैनल्स के अंदर। आपको पता है लिम्फ सर्जरी में अलग फेलोशिप होती है इधर। अच्छा। अच्छा यहाँ ठीक। पे ये रियाद मुझे उस दिन वो बता रहा था कि प्लास्टिक सर्जरी की सब स्पेशलिटी है लिम्फेटिक सर्जरी। लिम्फेटिक सर्जरी ठीक हो गया। चलिए जी, आज हमारे पे 3 सिनेरियोज हो गए। 3 सिनेरियोज ठीक है सर। what were those? सबसे first one, एक था diaphragmatic injury with the herniation. Initially that patient presented with the shortness of breath, in respiratory distress, and X-ray shows that there's evidence of hemothorax. So initially it was treated as a case of hemothorax, and later on it turned out to be it's a hernia, diaphragmatic hernia with the gangrenous colon. So the second other scenario was esophageal, spontaneous esophageal perforation, and the one scenario was with acute mesenteric ischemia. So it's initial assessment and the management, and we also discussed about the short bowel syndrome. So this is for the today's session. So see you tomorrow again. Thank you so much for joining and sharing your knowledge and experiences. Assalamu alaikum.